Now we will see Pascal's law. So let's go with the definition of the Pascal's law. The pressure exerted at any point on an enclosed liquid is transmitted equally in all directions. Or you can write this definition also. The pressure in a fluid at rest is same at all points if we ignore gravity. Okay? अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर करते हैं तो प्रेशर फ्लूइड में, अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो प्रेशर सारी डायरेक्शन में एक सिंगल पॉइंट पे हमेशा क्या होगा, सेम होगा. क्लियर? ओके. तो अभी हम इसी पास्कल्स की यही वाली लॉ को अभी हम प्रूव करेंगे. ओके, सो लेट्स गो विद द प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ. कैसे पास्कल्स की ये लॉ सही है? प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ. ओके, लेट्स सी. To understand the Pascal's law, we will make two assumptions. Okay, the first assumption that there is a triangular block placed inside the water, as you can see from the diagram, and the second assumption is that this block is very 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 small. आपको समझाने के लिए मैंने बड़ा बनाया, लेकिन ये काफी छोटा है. ये इतना छोटा है कि हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं E and A, ये जो डिस्टेंस है ये लगभग एक ही लेवल पे आती है. ओके, मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल अगर ये मतलब मान लो हमारा कंटेनर है, सो ए यहां पर होगा और ई यहां पर होगा. ऑलमोस्ट उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा. ओके, ऑलमोस्ट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई इज व्हाट? नेग्लिजिबल. ओके, मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा बनाया, बट इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? बहुत छोटा है. ये ट्रायंगुलर ब्लॉक बहुत छोटी है. क्लियर? ओके, तो यहां पर समझने के लिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा हमें यहां पर. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. हम लोग न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को रिवाइज कर लेते. न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ क्या थी? एवरी बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और in an uniform motion unless or until an external forces act on them. Okay, तो हम यहां पर न्यूटन की फर्स्ट लॉ लगाने वाले. सेकेंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, द फोर्स एक्ट ऑन अ सरफेस इज perpendicular to that surface. It's perpendicular to that surface. ओके, यहां पर मैं ये जो फोर्स की बात कर रहा हूं ये क्या है? थ्रस्ट है. ओके, जैसे कि हमने देखा था लास्ट क्लास में, थ्रस्ट हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा. तो हमें ये दो चीजों को समझ के हम इस डेरिवेशन को समझेंगे. क्लियर? सो लेट्स कम टू द डायग्राम नाउ. ओके, यहां पर सी दे आर द सरफेस लाइक ए बी सी डी. इस सरफेस के ऊपर वाटर क्या करेगा? थ्रस्ट लगाएगा इन दिस डायरेक्शन. सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट. आई विल से लेट्स टेक दिस विल बी व्हाट? एफ एक्स. ओके, यहां पर भी सी ए बी एफ ई में भी थ्रस्ट लगेगा इन दिस डायरेक्शन. आई विल से दिस इज व्हाट? एफ वाई. और ई एफ सी डी में भी थ्रस्ट लगेगा इन दिस अपवर्ड डायरेक्शन. दैट इज व्हाट? एफ जेड. ओके, see all the thrust is making an angle of 90 degree with the surface. Okay, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था. ओके, सारी थ्रस्ट अपनी सरफेस के साथ तो कितनी डिग्रीज बनाएगी? 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगी. नाउ लेट्स अज्यूम दैट सपोज इफ दिस इज व्हाट? अ पॉइंट. लेट्स कंसीडर दिस इज एन ओरिजिन आई एम ड्रॉइंग ओवर हियर. सपोज इफ दिस इज अ ओरिजिन O. Okay, if we divide this entire plane in two axes as we draw on the graph paper, this is x axis and this is y axis, correct? If you will see fx is going into the third quadrant. See, fx is going into the third quadrant, so I will make fx from the origin, it is going into the third quadrant. See, fy is going towards the positive x axis, so this is fy. Fz is going towards the positive y axis, so this is what? Fz. Clear this much? Okay. Now let's say this is angle theta.
क्लियर? यहां पर ED एंड AB के बीच में जो एंगल है वो कौन सी एंगल है? दैट एंगल इज व्हाट? थीटा. नाउ बाय डूइंग सम ज्योमेट्री, सी हियर व्हाट विल डू, हम लोग fx वाली लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, लाइक दिस. ओके, लाइक दिस. तो ED पे ये यहां पर आके मिल रहा है. ओके, सी इफ दिस इज थीटा, दिस इज 90, so this will be 90 minus theta in this case. If this is 90 minus theta, so with vertical line, it makes an angle of theta. Okay, see this is theta, this is 90. I will say this is my x. मुझे ये वाली एंगल नहीं पता. So x plus theta plus 90, we know that it is how much? 180 degrees. So x is equals to 180 minus 90 minus theta, which is what? 90 minus theta. So that's why this is what? 90 minus theta. Now let's say this angle is y. So I will say y plus 90 minus theta is equals to what? 90 degrees, because it is making a right angle triangle. Sorry, right angle. Okay. So therefore 90 and 90 get cancelled. So y comes out to be what? Theta. Clear? Fine. So let's make one more line from here, from origin, a vertical line. If this is angle theta, then due to the alternate angle test, this is also angle theta. So means fx is making an angle of theta with the vertical line. So I will say fx is making an angle theta with the vertical line. So I will write down this is theta. Clear? Fine. Now what we'll do? We'll make a rectangle. We know that this component of fx is fx cos theta, and this component of fx is what? Fx sin theta. Clear? Fine. Now we know that according to the Newton's first law of motion, if body is in equilibrium condition, okay, it means what? The net force on the body is what? 0. So I will say the net force on the body is 0. It means if the net force on the body is 0, means total horizontal component is 0. So what is the horizontal component? Fy minus fx sin theta, which is equals to 0. So therefore I will say Fy is equals to Fx sin theta. I will say this is my equation number 1. We'll keep side. Okay. Similarly, can we say that total vertical component is also 0? So therefore Fz minus Fx cos theta is equals to 0. So therefore can I say Fz is equals to Fx cos theta? I will say this is my equation number 2. Clear? Okay. Now come back to the triangle. In triangle ADE. In triangle ADE. Okay. Tell me what is the value of sin theta? Sin theta is opposite upon hypotenuse. So theta opposite is AE. Hypotenuse is AD. So I will write down AE upon AD. Clear? I will multiply numerator with AB and denominator with AB. हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों AB के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. So AE into AB, come back to the diagram. AE into AB means I am calculating the area of this rectangle. See, we know that the area of rectangle is length into breadth. So AE into AB is nothing but what? Area of rectangle ABFE. Or I will say that this area is nothing but what? AY. So let's consider this area as what? AY. So I will say this area is what? AY upon AD into AB. What is AD? This is AD into AB. Means I am calculating this area ADCB. Okay, let's say this area is what? AX. So therefore upon AX. So therefore I will write down AY is equals to AX sin theta. Clear? Next, in the same triangle ADE, tell me what is the value of cos theta?
We know that cos theta is adjacent upon hypotenuse. Okay. So what is adjacent? ED. Hypotenuse AD. So I will say it is ED upon AD. यहां पर भी हम किसी से मल्टीप्लाई कराएंगे. ED DC से मल्टीप्लाई करवा देंगे. DC to the numerator as well as DC to the denominator. So let's see ED into DC. ED into DC means I am calculating area of this rectangle. That is AZ. Let's take it AZ. So I will write down AZ upon AD into DC. AD into DC means area of this rectangle, that is AX. So this is AX. So therefore I will say AZ is equals to AX cos theta. Clear guys? So AY comes out to be AX sin theta. AZ comes out to be what? AX cos theta. I will say this is my equation number 3 and this is my equation number 4. Clear? Fine. Now, let's come back over here. What I will say, equation number 1 divided by equation number 3. Okay, equation number 1 को हम equation 3 से divide करेंगे. So therefore, Fy upon Ay. Fy upon Ay is equals to Fx sin theta upon Ax sin theta. So Fx sin theta upon Ax sin theta. So I will get cancelled. Sin theta get cancelled. So therefore it comes out to be Fy upon Ay is equals to Fx upon Ax. I will say this is equation number 5th. Now what we'll do, equation number 2nd divided by equation number 4th. So therefore what is equation number 2nd? Fz. What is equation 4th? Az is equals to Fx cos theta, Ax cos theta. So Fx cos theta divided by Ax cos theta. So cos theta get cancelled. So therefore Fz upon Az is equals to Fx upon Ax. This is equation number 6th. Now from equation 5th and equation 6th. Equation 5th and equation 6th. Right hand sides are equal, means left hand sides are also equal, or you can say all three of them are equal. Fx upon Ax, which is equals to Fy upon Ay, which is equals to Fz upon Az. Clear? Or we can say that pressure in x direction, pressure in y direction and pressure in z direction, all three of them is what? Same. See, we know that pressure is force upon area, right? So pressure in x direction, pressure in y and pressure in z, all three of them is what? Same. Now we will see the applications of Pascal law. The first application of the Pascal law is hydraulic lift. Now as the name indicates, lift means what? To lift any object. Okay, किसी भी heavy object को उठाना. Okay, जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख रहे होगे, यहाँ पर कार जितनी हैवी ऑब्जेक्ट को हम हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से उठा सकते हैं. ओके, छोटा सा फोर्स देने पे एक बड़ा फोर्स क्रिएट होगा which is used to lift the heavy object. Or you can say this device is nothing but what? फोर्स मल्टीप्लायर. ये डिवाइस क्या है? एक फोर्स मल्टीप्लायर है. ओके, मतलब फोर्स आपको बड़ा करके देगा. छोटा फोर्स लगाओगे आप और वही छोटा फोर्स आपको क्या करके देगा? एक बड़ा फोर्स बना के देगा. अ स्मॉल फोर्स कैन क्रिएट अ ह्यूज फोर्स यूजिंग व्हाट? हाइड्रोलिक लिफ्ट. ओके, तो ये काम कैसे करता है हम वो देखेंगे. ओके, यहां पर हमें पास्कल्स की लॉ जो हमने देखा था वो हमें ध्यान में रखनी है. That pressure at one point is always be equal. So therefore I will say that force upon area is equals to what? F2 upon A2. तो हम इस लॉ की मदद लगा के हाइड्रोलिक लिफ्ट को समझेंगे. Clear? Now suppose these are the two cylinders. Cylinder C1 and this is what? Cylinder C2. Clear? These two cylinders are connected through the pipe. And this pipe and the cylinders contains a liquid. Okay, and these cylinders also having a watertight pistons both side. I will say this is piston 1 and this is what? Piston 2.
Okay. In this case, the piston having an area small a, and in this case, piston having a large area capital A. I will say area A is greater than small a. Okay. Fine. What we'll do, a small amount of force we will apply on this piston. Okay. सिलेंडर 1 के पिस्टन में हमने छोटा सा फोर्स अप्लाई किया. इस फोर्स के अप्लाई करने की वजह से वहां पर प्रेशर क्रिएट हो गया. And what will be that value of pressure? Pressure which is created over there is nothing but what? F upon small a. Force upon area, right? Force F and area is A. Okay, now this pressure is transmitted equally. See, we know that the Pascal's law, that pressure is transmitted equally in all directions. So this pressure is transmitted equally in all direction, and what will happen over here? Water will exert pressure on the piston 2. वहां पर पानी प्रेशर बनाएगा पिस्टन 2 पे. ठीक है. सो वहां पर पानी ने जो प्रेशर बनाया, आई विल से दैट इज P2. ओके. यहां पर वाटर ने इसको F फोर्स से ऊपर भेजा. ओके. सो आई विल से द फोर्स इज व्हाट? F. एंड व्हाट इज एरिया इन दैट केस? एरिया इज कैपिटल A. सो द प्रेशर क्रिएटेड इज व्हाट? F अपॉन A. ओके. Fine. As we know that pressure is equal, जो प्रेशर यहां पर अप्लाई किया था वही प्रेशर ट्रांसमिट हो गया और यहां पर उसी प्रेशर से इसको ऊपर फेंकेगा. ओके. सो लेट्स से दिस टू प्रेशर्स आर इक्वल, सो देयरफॉर P1 is equals to what? P2. ओके. यही वाला प्रेशर जो आपने यहां पर दिया था यही यहां पर ट्रांसमिट हुआ है. ओके. सो दिस टू प्रेशर्स आर इक्वल. So therefore I will say that small f upon A is equals to capital F upon A. So therefore F is equals to small f upon A into capital A. Okay. As we know that capital A is greater than A. Right. So therefore I will say that F is greater than small f. See. Clear? So अगर A आपका small a से बड़ा है तो ऑब्वियसली कैपिटल एफ आपकी स्मॉल एफ से क्या हो जाएगी? ज्यादा ही होगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, एरिया ऑफ बिगर पिस्टन इज 20 मीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द स्मॉलर पिस्टन इज 10 मीटर स्क्वायर एंड यू अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन पिस्टन 1. सो व्हाट विल बी एफ? हाउ मच फोर्स क्रिएटेड बाय द वाटर ऑन द पिस्टन 2? So therefore using this formula, F is equals to F upon small a into capital A. F value is what? 5. Capital A 20, small a is 10. 5 to the 10 Newton. See, F is equals to 10 Newton. And the applied force is 5 Newton, but the force given by the water is 10 Newton. Capital F is greater than small f. So in this way, hydraulic lift is used as a force multiplier. Okay. Now let's see what will be the work done by two pistons. दोनों पिस्टन ने कितना वर्क डन किया और किसका वर्क डन ज्यादा होगा? पिस्टन 1 का वर्क डन ज्यादा होगा या पिस्टन 2 का वर्क डन ज्यादा होगा? So most of you will say, सर पिस्टन 2 का वर्क डन ज्यादा होगा क्योंकि फोर्स इसकी ज्यादा है. As we know that work done is a force into displacement, but that's the wrong thing. Work done will be same in both the piston. Means work done by the first piston is equals to work done by the second piston. We know that the formula for the work done is force into displacement. तो work done में force ही नहीं आता है, displacement भी आता है. Okay? समझते कैसे? For example, small f आपने 5 न्यूटन दी, कैपिटल F आपने 10 न्यूटन दे दी. इस पिस्टन को आपने 2 मीटर से खिसकाया. ओके, वी डिस्प्लेस दिस पिस्टन बाय 2 मीटर. सो लेट्स फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पिस्टन. इस पिस्टन ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की? ओके सॉरी, जब आपने स्मॉल एफ की वैल्यू 5 न्यूटन दी है एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर बाय द पिस्टन 1 and the force produced on the piston 2 is 10 Newton, so you will find out the displacement of the bigger piston is only 1 Newton. See, work done in this case comes out to be 5 to the 10 Newton meter
and work done in this case comes out to be what 10 into 1, that is what 10 Newton meter. So work done will be same for both the pistons. Okay, जहां पर फोर्स कम होगा वो पिस्टन को लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, मतलब ये पिस्टन आपका लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये पिस्टन इसके कंपैरिजन में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. एज वी कैन सी ओवर हियर फोर्स 5 न्यूटन लग रही है यहाँ पर, तो इसने डिस्टेंस कितना मीटर ट्रेवल किया 2 मीटर, और वहां पर फोर्स जो बना आपका वो 10 न्यूटन, तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना मीटर ट्रेवल किया 1 मीटर. क्लियर. तो जहां पर फोर्स कम होगी उस पिस्टन को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा. सो इससे मालूम पड़ता है कि वर्क डन बाय बोथ द पिस्टन्स आर व्हाट सेम. नाउ विल सी द सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स. एज वी नो दैट hydraulic brakes are used in the automobiles so that vehicles get stopped. Now let's see how the hydraulic brakes works. Okay, hydraulic brake काम कैसे करता हम लोग देखते हैं. Suppose this is the construction of the hydraulic brake. Okay, this construction, this is your brake pedal जहाँ पर हम brake push करेंगे, which is connected to the lever system, and lever system is further connected to the master cylinder. Master cylinder having a piston which is tightly packed. Okay, and this master cylinder contains brake oil. यहाँ पर पूरा आपका brake oil है. Okay, this entire thing is your brake oil. Fine. So master cylinder is further connected to the tube, and then the tube, another end of the tube is connected to the wheel cylinder. Okay, now wheel cylinder having the two pistons, that is P1 and this is what P2. Okay, now this two piston is connected to the brake shore. Okay, ये दो pistons किससे connected है? brake shore से connected. Okay, now this brake shore is further connected with spring like this. Okay, now let's see how it works. And one more thing in this case, that area of wheel cylinder is greater than the area of master cylinder. If area of wheel cylinder is greater than the area of master cylinder, then force, कौन सा फोर्स बड़ा होगा? wheel cylinder वाला फोर्स बड़ा होगा या master cylinder वाला फोर्स बड़ा होगा? Obviously wheel cylinder. We know that the pressure at wheel is equals to force of wheel cylinder upon area of wheel cylinder, and pressure of master cylinder is equals to force on master cylinder upon area of master cylinder. We know that pressure will be same, so pressure of wheel is equals to pressure of master. So therefore force of wheel cylinder upon area of wheel cylinder is equals to force of master upon area of master. So therefore force of master cylinder is equals to force of wheel cylinder upon area of wheel cylinder into area of master cylinder. Clear? As we know that area of master cylinder is less than the area of wheel cylinder. So area of master cylinder is less than the area of wheel cylinder. So therefore force of master cylinder is less than what? Force of wheel cylinder. Clear? तो व्हील सिलेंडर का फोर्स क्या होगा आपका? ज्यादा होगा. फोर्स ऑफ व्हील सिलेंडर इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ मास्टर सिलेंडर. क्लियर? ओके. और यू कैन मेक इन दिस वे ऑल्सो दैट फोर्स ऑफ मास्टर अपॉन फोर्स ऑफ व्हील, फोर्स ऑफ मास्टर अपॉन फोर्स ऑफ व्हील इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ मास्टर अपॉन एरिया ऑफ व्हील सिलेंडर. As we know that area of wheel cylinder, area of wheel is greater than area of master. Okay, if denominator is greater than the numerator for this side also, then denominator is greater than the numerator. So force on wheel cylinder is greater than the force on master. Okay, इसके लिए हम wheel cylinder की एरिया ज्यादा रखते हैं ताकि यहाँ पर जो पिस्टन फोर्स बना है ब्रेक शोर पे, वो फोर्स क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए. क्योंकि आपकी व्हीकल हो सकता है बहुत फास्ट ट्रेवल कर रही है और उस व्हीकल पे हम ब्रेक्स लगाएंगे, तो ब्रेक्स लगाने के लिए हमें ह्यूज फोर्स चाहिए. ओके, व्हील्स को रोकने के लिए हमें ह्यूज फोर्स चाहिए. तो इसके लिए हम ह्यूज फोर्स कहां से, ह्यूज फोर्स प्रोवाइड करने के लिए एरिया मुझे यहाँ पर व्हील सिलेंडर का ज्यादा होना चाहिए. एरिया ऑफ व्हील सिलेंडर शुड बी लार्जर.
एरिया ऑफ व्हील सिलेंडर लार्जर होगा तभी आपका फोर्स भी क्या होगा, लार्ज होगा। क्लियर? इसके लिए हमें एरिया ऑफ व्हील सिलेंडर को बड़ा रखना पड़ता है। नाउ लेट्स सी काम कैसे करेगा ये। फॉर एग्जांपल अभी आपको ब्रेक लगाना है, सो यू प्रेस द ब्रेक पैडल। ओके, तो लीवर सिस्टम की मदद से ये पिस्टन जो है ये आपका अंदर जाएगा। ओके, लीवर सिस्टम इसके ऊपर फोर्स क्रिएट करवाएगा F, और इसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ मास्टर सिलेंडर। तो यहां से प्रेशर बना आपका। ओके, तो ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा। सी दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ वन व्हील, देयर आर द 4 व्हील्स, चारों व्हील्स पे इक्वली ट्रांसमिट होगी ये प्रेशर। तो हम पहले एक ही व्हील के लिए देखेंगे क्योंकि चारों व्हील्स के लिए प्रिंसिपल सेम ही है। सो लेट्स सी फॉर द वन व्हील। ओके, तो यहां पर ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है। देखो प्रेशर यहां पर आया और यहां पर ये वाला प्रेशर इन दोनों पिस्टन्स पे लगेगा, और ये पिस्टन सी यहां पर प्रेशर लगने की वजह से ये जो पिस्टन है आपकी ये से बाहर खिसक जाएगी। तो ये पिस्टन की बाहर खिसकने की वजह से जो ब्रेक शोर है ये व्हील के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। मतलब मान लीजिए ये आपकी व्हील है और ये ब्रेक शोर है, जैसे ही सिलेंडर बाहर खिसका, पिस्टन आपका बाहर गया, बाहर डिस्प्लेस हो गया, तो ये जो ब्रेक शोर है आपकी ये व्हील के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी। तो इनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा। ये फ्रिक्शन क्या करेगा, व्हील को रोकने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से आपका व्हील रुक जाएगा। अभी जब जैसे ही आपकी कार रुक गई, आपकी व्हीकल रुक गई, सो आप क्या करोगे, ब्रेक पैडल को छोड़ दोगे। जैसे ही ब्रेक पैडल छोड़ दिया, यहां पर लीवर सिस्टम की वजह से मास्टर सिलेंडर का जो पिस्टन है वो पीछे आ जाएगा, जिसकी वजह से सारी लिक्विड्स, ब्रेक ऑयल बोलते हैं, ब्रेक ऑयल वापस से मास्टर सिलेंडर में आ जाएगी। यहां से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। प्रेशर रिलीज होने के बाद अब ये स्प्रिंग अपना काम करेगा। ये स्प्रिंग क्या करेगा, सी ये जो आपकी ब्रेक शोर जो व्हील के साथ कनेक्ट हो गई, स्प्रिंग क्या करेगा, उसको वापस से पुल करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आ जाएगा। सो दैट ब्रेक शोर नाउ इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विथ व्हील। ओके, अभी आपकी ब्रेक शोर व्हील के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो अभी आपकी ब्रेक्स लगना बंद हो गई है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स इस तरीके से काम करते हैं। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। Two pistons of hydraulic press having the diameter of 30 centimeter and 2.5 centimeter. What is the force exerted by the larger piston when 50 kg weight is placed on the smaller piston if the stroke of the smaller piston is 4 centimeter? Through what distance larger piston will move after 10 strokes? Second part of the question हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पर स्मॉलर पिस्टन पे कितनी वेट प्लेस्ड है, 50 kg वेट। सो आई विल राइट डाउन दैट फोर्स ऑन द स्मॉलर पिस्टन इज 50 kg वेट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर पिस्टन? अच्छा, एरिया नहीं दिया हुआ है हमें, डायमीटर्स दी हुई है। सो द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पिस्टन इज 2.5 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द लार्जर पिस्टन इज 30 सेंटीमीटर। वी वांट टू फाइंड आउट द फोर्स on the larger piston, how much force is generated on the larger piston. Okay, so therefore first of all we'll calculate the area. A is equals to what, pi r1 square. Okay, r1 is what is the value of r1? It's 2.5. See, we know that radius is a diameter, half of the diameter, so diameter is 2.5 divided by 2, which is what, 1.25 centimeter. Convert into meter, 1.25 into 10 raised to minus 2 meter. Okay, so therefore A1 is equals to pi, the value of R1 is 1.25 into 10 raised to minus 2 square. Okay, so pi 1.25 square into 10 raised to minus 4. Okay, meter square. So this is area A1. Okay, area of the smaller piston. Next we'll calculate the area of the larger piston. So first we'll calculate the radius of the larger piston. Diameter is 30 centimeter. So R2 will be what? Half of the diameter. That is what? 30 upon 2. That is how much? 15 centimeter. Okay. So A2 is equals to pi R2 square. That is what? Pi 15. Achha, let's convert centimeters into meter. So 15 into 10 raised to minus 2 meter. So 15 into 10 raised to minus 2 square. Always try to keep everything in SI units, so that it may avoid the confusion. Okay, so therefore pi, we know that the square of 15 is 225, but we are not writing right now, हम लास्ट में उसको लिखेंगे.
So pi 15 square into 10 raised to minus 4 meters square. So this is what A2. Clear? As we know that from the Pascal's law, whenever you create the pressure is equally transmitted. तो यहाँ पर जो pressure लगेगा P1 और यहाँ पर जो water pressure लगाएगा P2, these two pressures are what? Same. Okay? यहाँ पर आपने जो pressure P1 लगाया है और यहाँ पर जो pressure P2 लगाया है पानी ने या फिर कोई भी liquid ने, तो वो pressure क्या होगा? Same होगा. So we know that P1 is equals to what? P2. So what will be the value of P1? Force upon area, F2 upon A2. So therefore F2 is equals to A2 upon A1 into F1. What is the value of A2? Pi 15 square into 10 raised to minus 4. A1 pi 1.25 square into 10 raised to minus 4. The value of F1. Force F1 is 50 kg weight. I'll write over here. Force F1 is 50 kg weight. Let's convert it into Newton. That is 50 into 10, which is how much? 500 Newton. We took the conversion of 1 kg weight is what? 10 Newton. Actually it is 9.8, but to make the calculation easy, we took 10 Newton. So therefore into, what is the value of F1? That is 500. So 500. Cancel. So your answer is 15 square upon 1.25 square into 500. Clear? So let's calculate what will be this value. So 15 square so it comes out to be 72,000 Newton. 72,000 Newton. तो इतनी force generate हो गई. Okay? So this much amount of force is generated on the larger piston. Now let's come to the second part of the question. If the stroke of the smaller piston is 4 cm, through what distance larger pistons will move after 10 stroke? Stroke means in one attempt, the distance covered by the smaller piston is 4 cm. मतलब एक attempt में हमने कितना distance cover किया? 4 cm. For example, let's say ये जो piston है आपका अभी यहाँ पर था, ये यहाँ पर आ गया. So in the first stroke, the distance covered by the smaller piston is 4 cm. और जो आपका larger piston था वो यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गया. So this distance, ये जो आपकी distance है, let's take this distance is what? L2. मैंने इसको क्या ले लिया? L2. और ये वाली जो distance cover हुई है ये L1. तो ऐसे हमने 10 strokes दिए, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि 10 स्ट्रोक्स में लार्जर पिस्टन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक स्ट्रोक में, इन वन स्ट्रोक, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द लार्जर पिस्टन. ओके, वी नो दैट वर्क डन will be the same in the entire case. So therefore I will say that we know that work done formula F1 into L1, force into distance, force into distance traveled by the piston. Same over here. Force, यहाँ पर देखो जो liquid है वो force लगा रहा है in the upward direction, that is F2. So force into distance, that is L2. So F2 into L2. So therefore L2 is equals to F1 L1 upon F2. So what is F1? F1 is 500. The value of L1, it's 4 centimeter. Let's convert into meter. 4 into 10 raised to minus 2 meter. F2, 72,000. Okay. 500 into 4, it's 2,000, right? 72,000 into 10 raised to minus 2. Let's get cancelled. So 2 upon 72, 1 upon 36. So 1 upon 36 into 10 raised to minus 2 meter is distance travelled by the larger piston in one stroke. So what is the total distance travelled by the larger piston in 10 strokes? Obviously, L is equals to what? 10 L2. What is capital L? Capital L is the distance travelled by the larger piston in 10 strokes. So 10 number of stroke into the number of distance travelled. 10 into distance travelled in one stroke. So 10 into 1 by 36 into 10 raised to minus 2. So that is what?
10 raised to minus 1 upon 36. Okay, or you can write down 0.1 divided by 36. So let's calculate what is 0.1 divided by 36. .78 into 10 raised to minus 3 meter. So this much distance will covered in 10 stroke. 10 strokes में इतनी distance cover कर लेगा. Clear? Let's see the another problem. An automobile back is lifted by hydraulic jack that consists of two pistons. The large piston is 1 meter in diameter and the smaller piston is 10 centimeter in the diameter. If W be the weight of a car, how much smaller force is needed on the small piston to lift the car? Okay, मतलब जो कार है obviously larger piston पे रखा हुआ है, इसके लिए हमें बोला है कि कितना फोर्स चाहिए स्मॉल पिस्टन पे कार को लिफ्ट करने में. तो इतनी कॉमन सेंस बनती है कि कार जो रखा हुआ है वो कहाँ पर रखा हुआ है, लार्जर पिस्टन पे रखा हुआ है. ठीक है, सो यहां पर व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द लार्जर पिस्टन. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन पार्ट. The large piston is 1 meter in diameter. So diameter of larger piston is 1 meter. So radius of the large piston is half of the diameter, that is 1 by 2, 0.5 meter. The diameter of the smaller piston is 10 centimeter, or you can write down 0.1 meter. So radius of the smaller piston is how much? Half of the diameter, that is what? 0.1 divided by 2, it's 0.05 meter. Clear? You can write this equation as 5 into 10 raised to minus 1 meter and this is 5 into 10 raised to minus 2 meter. Okay? If W be the weight of a car, so W is what? The weight of the car which is present on the larger piston. So I will say that the force on the larger piston is W. We want to find out the force on the smaller piston. That is our question mark. Okay, force on the smaller piston is the question mark to us. So now we will use the same formula, Pascal's formula, that pressure on the larger piston is equals to pressure on the smaller piston. Okay, this is a question of hydraulic lift. तो कब से हम देखते आ रहे that pressure on the larger piston is equals to pressure on the smaller piston. So what is the pressure on the larger piston? Formula: force on the larger upon area of larger piston. Same over here, force on the smaller, area of the smaller. So therefore force of the smaller piston, FL into AS upon AL. Okay, what is the force on the larger piston? The force on the larger piston is W. So let's take it as W, force on the larger piston W. Area of the smaller piston, pi into RS square. Area of the larger piston, pi RL square. Pi and pi get cancelled. So it comes out to be W RS upon RL the whole square, which is equals to W. What is the value of RS? 5 into 10 raised to minus 2. So 5 into 10 raised to minus 2. RL 5 into 10 raised to minus 1. इनका क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे. 5 and 5 get cancelled. Minus 1 will come up becomes plus 1. So minus 2 plus 1. I'll write over here. 10 raised to minus 2 plus 1. Minus 2 plus 1 is nothing but what? 10 raised to minus 1 square, which is W. Minus 1 into 2. 10 raised to minus 2. Clear? So this is force on the smaller piston. So therefore force on the smaller piston is equals to W into 10 raised to minus 2 Newton. This much amount of force we have to apply on the smaller piston. Clear? Okay. Okay. Let's try to find out the pressure exerted by a liquid column. Okay. लिक्विड कॉलम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी प्रेशर एक्सर्ट करवाती है वो फॉर्मूला हमें डिराइव करना है. सो टू फाइंड आउट द फॉर्मूला, लेट्स कंसीडर अ वेसल हैविंग अ हाइट h and area a. Bottom part of the
bottom part of this vessel having an area A. This vessel is filled with a liquid having a density rho. Okay, fine. So to find out the pressure, first we look out the formula for the pressure. Pressure is thrust upon area. We know that thrust means what? The force. Force upon area. So we want to find out how much pressure exerted by the liquid column on the bottom part of the vessel. वेसल की बॉटम पार्ट पे इस पूरी लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर क्रिएट हुआ. तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा उसके लिए कि इस लिक्विड की वजह से बॉटम पार्ट पे कितनी फोर्स क्रिएट हुई. ओके, सो यहां पर लिक्विड का जो वेट होगा, द वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम, द वेट ऑफ द एंटायर लिक्विड कॉलम इज व्हाट? W. This entire weight creates a force on the bottom part of the vessel. Vessel की bottom part पे ये force create करवाएगा. Okay, so therefore I will say that this force is nothing but what? The thrust. Okay, यही force क्या है? Thrust है. Means thrust यहाँ पर bottom part पे thrust कौन create करवा रहा है? The weight of the liquid column. So therefore I will say the formula gets modified into weight upon area. Clear? We know that the formula for weight is mg, where m is a mass of liquid in a vessel. Okay, and g is acceleration due to gravity. So we know that density is equals to mass upon volume. So mass is equals to density into volume. So therefore I will write down instead of mass, density into volume. So weight is equals to density into volume into G. But volume of this vessel, I will say that area into height. So therefore volume is equals to area into height. So therefore weight comes out to be rho A into H into G. Put the volume value in this equation. So therefore weight comes out to be rho AH G. Clear? So therefore let's calculate. Let's see what is the pressure now. Pressure is equals to weight upon area. So weight is rho AH G upon A. Okay. So therefore A and A get cancelled. So pressure is equals to rho Hg. So this is the formula for the pressure. This much amount of pressure exerted by the liquid column on the bottom of the vessel. So therefore I will say that pressure depends on three factors. Pressure depends on height, or you can say depth. Pressure depends on height, then or height or depth, whatever you can say. Another, density. Pressure depends on density also. And the third thing, pressure depends on acceleration due to gravity. So pressure depends on the three factors: height, as density, and acceleration due to gravity. Now I want to show you one more thing. For example, if I want to find out the pressure at this point is located at a distance x, okay, from the top of the vessel. So therefore pressure, let's say this point is A. So pressure at point A is what? Rho G. See, the liquid is same, so therefore the density will be rho. Acceleration due to gravity G, but the height changes. So pressure at point A is what? Rho Gx. I want to find out the same pressure at this point only, also point B. This A and B lies at the same distance from the top of the vessel. B also lies at a distance of x from the top of the vessel. So pressure at B is equals to rho Gx again. See, density into acceleration due to gravity. Height of B from the top is x.
So therefore pressure at B is rho gx. So what is the conclusion of this? That pressure on the same line is always same. The pressure on the same line is always same. If you want to find out the pressure at C, you will get the same answer, rho gx. So pressure on the same line, because the depth, or you can say height, is same. So because of height and depth is same, the pressure on the particular line, horizontal line, will always be same. So that's the conclusion. Now I want to show you one more thing, that as we calculate the pressure at A is rho gx. Now suppose this distance is x1. So pressure at A is rho gx1, pressure at B is rho gx1, and pressure at C is also rho gx1. Okay. If I tell you, find out the pressure at this point. This is point D, which is located at a distance of x2 from the top of the vessel. Okay. So pressure at D is equals to, your answer will be rho gx2. Okay. So my question is to you, which pressure is greater, pressure at A or pressure at D? So to find out that, we know that from the diagram, we know that x2 is greater than x1. x2 is greater than x1. So therefore, pressure at D, that is rho gx2, is greater than the pressure at A, that is rho gx1. Okay. So it means what? As the depth increases, आपकी depth increase होते जाएगी, तो pressure भी क्या होते जाएगा? Increase होते जाएगा. So this is the second conclusion. So we made two conclusions from this. First conclusion, pressure on the same line will always be same, and as the depth increases, the pressure also increases. Okay. Now we will see effect of gravity on fluid pressure. What is the effect of gravity on the pressure? Now let's assume that this is a cylindrical tank which is present in a water containing vessel. Okay. This tank having a height h. The upper part of the cylinder is at a depth of h1 from the free surface of the liquid, and the bottom part is at a depth of h2 from the free surface of the liquid, and the cross sectional area is A. Okay. So on this cylinder, water will create a pressure. See, water is creating a pressure like this. See. Why the size of arrow is different? As I told you, the size of arrow represents the magnitude. So as we know that as the depth increases, the pressure also increases. See, the depth is increasing, so the pressure is also increasing. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अगर depth बढ़ती जाएगा तो pressure भी क्या होगा, बढ़ती जाएगा. So same happens over here. Depth increases, the pressure also increases, but the pressure on the same line will be same. So that's why this arrow size and this arrow size is what? Same. Clear? Means what? This pressure will cancel out this pressure. This pressure will cancel out this pressure. So all the left hand side pressure will cancel out of the right hand side pressure. So that's why this cylinder will not move to the left right. This cylinder will be in the equilibrium condition. Clear? Now next we will see what will be the pressure. Suppose at this point the pressure is P1. At this point the pressure is P2. These two pressure will be same? No. These two pressure will not be same. As I told you, the height of this pressure is H1 and the height of this pressure is what? H2 from the free surface of the water. So due to difference in height, this pressure is also different. So which pressure is greater? Obviously we have seen the pressure at a depth, at a greater depth is greater than the pressure at the lesser depth. तो P2 आपका P1 से क्या होगा? बड़ा होगा. Okay. So we know that pressure is nothing but what? Force upon area. So I will say the force on the top part is F1 as the area is same. So means pressure जो आपका अलग होगा वो किसकी वजह से होगा? Obviously force की वजह से होगा. आपकी एरिया तो सेम है ना,
सी एरियाज आर सेम, तो जो प्रेशर अलग हो गया आपका, सी P1 एंड P2 आर द टू डिफरेंट प्रेशर्स, तो ये जो दो अलग प्रेशर हुआ वो किसकी वजह से हुआ, फोर्स की वजह से, क्योंकि दोनों एंड्स पे फोर्स अलग अलग लगेगा. सिमिलरली प्रेशर एट द बॉटम पार्ट, pressure at second part, bottom part is F2 upon A. So therefore F2 becomes what? P2 into A. Clear? At this point, see there is a liquid present inside the cylinder also. So liquid also put its weight on the bottom part. Liquid अपना weight bottom part पे डालेगा, that is W. ऊपर प्रेशर P1 की वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ वो आपका फोर्स क्या था, F1. सी P1 की वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ वो क्या है आपका F1, और P2 की वजह से जो फोर्स जनरेट हुआ वो आपका है F2. बट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. अगर आपकी सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सो द नेट फोर्स विल बी व्हाट, 0. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन नेट फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 0. So what will be the net force? See F1 plus W minus F2. I will say F1 plus W minus F2 is equals to 0. As F2 is in the opposite direction as that of F1 and W, so that's why it is written with negative sign for opposite direction. Clear? So therefore F2 is equals to F1 plus W. Or you can write down F2 minus F1 is equals to W. What is W? W is the weight of liquid inside the cylinder. So therefore I will write down, but we know that weight is nothing but what, mass into gravitational acceleration. What is M? M is a mass of liquid in cylinder. Mass of liquid in cylinder. Okay? Fine. But we know that the formula for the density is mass upon volume. So therefore mass is equals to density into volume. So mass क्या हो गया आपका, density into volume. So therefore weight comes out to be, so therefore weight is equals to mg ना, तो m की जगह में क्या लिखूंगा, density into volume into g. Okay, we know that what will be the volume. The volume is nothing but area into height. So I will write down volume is area into height into G. So that is your weight. Clear? So putting the value of F1, F2 and W in this equation. So therefore I get, what is the value of F2? It's P2A. So P2A minus, what is the value of F1? It's P1A. So P1A is equals to, what is the value of W? Rho into A into H into G. So P2 minus P1 into A, rho A H G. So A and A get cancelled. So therefore P2 minus P1 is equals to rho H G. So therefore P2 is equals to P1 plus rho H G. So this is the value. Clear? Okay. Now class assume that this cylinder, ये पानी के एकदम अंदर नहीं होके इसका जो टॉप पार्ट है ये वाटर की या फिर लिक्विड की सरफेस पे होगा. मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ लाइक दिस. आपका भी सिलेंड्रिकल टैंक कुछ ऐसे हो गया. सी दिस इज ऑन द टॉप पार्ट. पहले थोड़ा सा पानी के अंदर था, अभी ये क्या हो गया, ऊपर आ गया. इसकी हाइट सेम है एंड द एरिया इज ऑल्सो ए. ओके, एरिया और हाइट में कोई भी चेंजेस नहीं है. ठीक है, एंड इट इज फिल्ड विद द सेम लिक्विड. लिक्विड सेम ही है. ओके, नाउ सी हियर, यहां पर ये जो प्रेशर P1 जो डेवलप हुआ था लिक्विड के सिलेंडर के टॉप पार्ट पे, ये किसकी वजह से हुआ था? ये जो ये वाली लिक्विड थी ना आपकी जो यहां पर प्रेजेंट थी, इसकी वजह से ये प्रेशर जनरेट हुआ था. बट अभी यहां पर इसके ऊपर तो कोई लिक्विड है ही नहीं, तो क्या प्रेशर जनरेट नहीं होगा उसके ऊपर? तो क्या उस केस में P1 0 होगा?
नहीं, उस केस में P1 0 नहीं होगा। उस केस में एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगाता है। सो यहां पर प्रेशर कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर। तो यहां पर PA इज नथिंग बट व्हाट? योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहां पर जो बॉटम पे प्रेशर होगा वो आपका P2 होगा। सो इन दिस केस we will replace P1 with PA. So therefore your formula becomes P2 is equals to PA rho Hg. Okay? अगर उसका एक पार्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो एटमॉस्फेयर भी क्या करेगी? उस सिलेंडर की उस पार्ट पे प्रेशर लगाएगी एंड दैट प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा, दैट इज P2 is equals to PA plus rho Hg. क्लियर? फाइन। सो यहां पर हमने बहुत सारी चीजें देखी, प्रेशर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन कर लेते हैं हम लोग यहां पर। दैट प्रेशर, आई विल से दैट प्रेशर एट दिस पार्ट P2 को हम लोग क्या ले लेते हैं? लेट्स P2 इज इक्वल्स टू व्हाट? P। P2 को हमने क्या ले लिया? P। सो P इज इक्वल्स टू PA प्लस रो Hg। ओके, मतलब बोलने का मतलब प्रेशर लिक्विड के अंदर कहीं भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा रो Hg से। ओके, सो देयरफॉर द एक्सेस प्रेशर P minus PA is equals to what? Rho Hg. Okay, so P minus PA, this pressure is known as gauge pressure. इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? गेज प्रेशर बोलेंगे। Clear? So this pressure is known as what? The gauge pressure. Fine. Now we will see effect of gravity on the fluid pressure. Let's check out what is the effect of gravity on fluid pressure. Let's assume there is no gravity. हमने ऐसा assume कर लिया कि यहां पर कोई gravity है ही नहीं. Okay? If there is no gravity, that is, I am supposed to saying that G is equals to 0. If G is equals to 0, so therefore P2 is equals to P1. Come back to this formula. P1 plus rho Hg, na, this formula. If G is 0, so P2 is equals to what? P1. So means pressure at everywhere inside the liquid, चाहे P2 या P1 कहीं पे भी हो, लिक्विड में प्रेशर हमेशा क्या होगा? सेम होगा। दिस इज व्हाट? पास्कल्स लॉ। यही तो था पास्कल्स लॉ। इसके लिए पास्कल्स ने कहा था कि मेरा लॉ तभी वैलिड होगा अगर तुम ग्रेविटी के इफेक्ट को निग्लेक्ट करोगे। लेकिन हमारे केस में हम ग्रेविटी के इफेक्ट को निग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ग्रेविटी अर्थ पे हर जगह। तो पास्कल्स ने क्या किया? अपनी लॉ को मॉडिफाई कर दिया एंड ही टोल्ड दैट डिफरेंस इन प्रेशर P2 माइनस P1 को आप यहां पर लेके आओगे, सो द डिफरेंस इन प्रेशर इज इक्वल्स टू रो Hg. सो दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ पास्कल्स लॉ। ओके, तो पास्कल्स ने कहा कि डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स is nothing but rho Hg. What is H? H is the difference. H is the distance between that 2 points. Okay, clear? See, H is the distance between the 2 points.